Very beautiful. Good morning to class 12 biology students. Now we are going to start our next chapter 3, human reproduction, in which we are going to discuss all the processes which are related to the human reproduction. As we know that human do the sexual mode of reproduction, so to conduct this process there are some sub processes which are going on one by one to conduct the whole process. So by a particular sequence I am going to discuss all these processes one by one. So first, to conduct this process, the first process is the gametogenesis. As the word indicates, gameto means gamete, genesis means formation. It means the first process is formation of both type of gametes. It means male and female gamete formation is known as gametogenesis. After gametogenesis, the next process is insemination. In means inside, semen means semen, the liquid which contain the sperm. Ation means insertion. It means the insertion or the transfer of sperm from male to female body. Now when these sperm are transferred to the female body, so the next step is fertilization. It means फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. जो दोनों गैमीट्स हैं वो क्या होंगे, फ्यूजन करेंगे. नाउ द नेक्स्ट इज इम्प्लांटेशन. इट मीन्स अटैचमेंट ऑफ zygote or embryo on the wall of uterus. It means it is the indicator of pregnancy. It means when the zygote is attached at the wall of the uterus, it means now the female become pregnant. This is known as implantation. After implantation, gestation. It means the duration of baby development. वो जो पूरी ड्यूरेशन आती है इसमें बेबी डेवलपमेंट होता है, दिस इज नोन एज जेस्टेशन. एंड फाइनली इट इज parturition. It means when the development of baby is completed, then it is delivered out from the body, from the mother's body. It is known as parturition. And after the completion of this process, the last process is started, that is known as lactation. It means the secretion of milk from mammary glands. So these are the processes which we have to discuss one by one, जो हमें discuss करनी है एक एक कर कर. So before discussing these processes, there is a need to understand the structure of male and female reproductive system, because both system have remarkable differences. दोनों ही systems में, दोनों की functioning में बहुत special differences होते हैं, जिनमें से एक मैं आपको बताती हूँ. In males, sperm start to produce after the puberty. Males में जो sperms हैं वो कब बनना शुरू हो जाते हैं, puberty के बाद में. But in females, ova start to develop when the female is present in the embryo condition. जब वो female खुद एक embryo है तभी उसकी ओवरी डेवलप हो जाती है, उसके ओवा का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है. बट दे बिकम मैच्योर आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, आफ्टर द प्यूबर्टी. लेकिन इनका जो उनका जो मैच्योरेशन है वो प्यूबर्टी आने पर हम क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग पर शुरू होता है. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. सेकेंड डिफरेंस, दैट इन 1 month फीमेल प्रोड्यूसेज ओनली 1 ओवा. एक मंथ में फीमेल एक ही ओवा प्रोड्यूस करती है, वाइल मेल प्रोड्यूसेज मिलियन ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग 1 इंसेमिनेशन. जबकि मेल एक इंसेमिनेशन में ही मिलियन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बीच में. उनकी बेसिक डिफरेंस हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिससे कि हम दोनों के बीच के जो स्ट्रक्चर्स के डिफरेंस हैं उनको पता कर लें. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. After completion, then in next session of class we will discuss about the male reproductive system. So come to the diagram. So here is the diagram of female reproductive system.
before starting to explain, I want to tell you it is more complex than male reproductive system, because there are so many processes which conduct inside the genital organs of female. The function of male organ only to produce the sperm and to transfer it, but in the body of female, in the genital organ of female, the sperm comes, it receives the sperm, the fertilization occurs, the development of baby occur, as well as the delivery of the baby also occur from the system. So it is more complex than the male reproductive system. So basically the female reproductive system has two components. First is the primary reproductive organs and second is the accessory ducts. जो मेन उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जिनको हम सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कह सकते हैं, उनके साथ साथ डक्ट्स होती हैं, और इसके साथ में हम इंक्लूड करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेमरी ग्लैंड्स, बिकॉज after the delivery of the baby, memory glands also help to in the development of the baby by nourishing it. So in female reproductive system, memory glands are also included. So firstly we are going to discuss the main part of the female reproductive system. These are the ovaries. A pair of ovaries present in the female which are situated in the at the both sides of abdominal cavity. Abdominal cavity के दोनों साइड में एक एक ओवरी सिचुएटेड होती है, which is connected to the pelvic wall. जो हमारी pelvic girdle की जो wall है उससे connected होती है, साथ साथ में uterus से भी connected होती है with the help of ligaments. Now you can see these tissues by which this ovary is connected to the fallopian tubule or the pelvic wall. This structure, this tissue is known as ligament. If we see the structure of ovary, अगर हम ओवरी की स्ट्रक्चर को अंदर से देखेंगे, मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करूंगी आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ओवरी का, अगर हम अंदर से देखेंगे और उसकी मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखेंगे, देन ओवरी इज कवर्ड बाय अ वॉल. ओवरी एक वॉल से कवर्ड होती है, दैट इज नोन एज एपिथेलियम, एंड इनसाइड इट उसके अंदर एक कैविटी होती है, दैट इज नोन एज ओवेरियन स्ट्रोमा, जिसको हम ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं. दिस ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. ये ओवेरियन स्ट्रोमा जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है. जैसे किडनी हमारी दो पार्ट में डिवाइड होती है, कौन कौन सा पार्ट होता है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला. इसी तरीके से हमारा जो हमारी ओवरी का स्ट्रोमा है वो भी कॉर्टेक्स और मेड्यूला में डिवाइडेड होता है. Now these are the main organs which are helpful to produce the ova as well as to secrete the female hormones estrogen and progesterone. So the main functioning of this system is done by the ovaries, formation of ova as well as the secretion of hormones. Now we will come to the accessory ducts. अब हम आते हैं accessory ducts पर. So the main duct of the female reproductive system is known as oviduct, which is also known as fallopian tubule, जिसको हम क्या कहते हैं, fallopian tubule. दोनों ओवरी के साइड में oviduct situated होती हैं, and there are some parts of oviduct. The first part of oviduct or fallopian tubule is known as infundibulum, and the marginal part of infundibulum have some finger-like projections which are known as fimbri, and the function of fimbri to receive the ova from the ovary. ये जो fimbri है उनका काम है कि जब ये ओवरी ओवा बनाए और वो ओवा मैच्योरेशन के बाद में बाहर निकले उस ओवरी से, तो उसको कलेक्ट करना, उसको रिसीव करने का काम है फिम्बरी का. Now the next wider part of the oviduct is known as ampulla, and finally ampulla opens into stomach. This is a very special portion. In between the ampulla and stomach there is a junction which is known as ampullary stomach junction, and it is known as the site of fertilization. ये वो साइट है एम्पुला स्टमक के बीच का पोर्शन, जंक्शन, जहाँ पर स्पर्म और ओवा मिलते हैं और उनका फर्टिलाइजेशन होता है. नाउ बोथ द फैलोपियन ट्यूब्यूल ओपन इनटू अ इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज यूट्रस. एक इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर में खुलती है जिसको कहते हैं हम यूट्रस, एंड दिस इज द कैविटी, दिस इज द स्ट्रक्चर वेयर द बेबी डेवलप्स, जहाँ पर इम्प्लांट होता है बेबी और उसका डेवलपमेंट होता है. दिस इज नोन एज यूट्राइन कैविटी. नाउ आवर यूट्रस हैज 3 वॉल्स. हमारे यूट्रस में 3 वॉल्स होती हैं. द आउटर मोस्ट वॉल इज नोन एज पेरीमीट्रियम विच इज अ प्रोटेक्टिव लेयर. द मिडिल लेयर इज नोन एज मायोमीट्रियम विच हेल्प इन द at the time of delivery when the baby completed its development growth period, then this myometrium start to contract and relax, by which it help to come out the baby from the system, from the reproductive system. And the innermost layer of the female reproductive system, or we can say the uterus, innermost uterus wall is known as endometrium, which changes itself during the menstrual cycle. जो menstrual cycle में बहुत सारे cyclic changes show करती है, जो हम menstrual cycle में discuss करेंगे.
Now this uterus open into a structure that is known as narrow structure that is known as cervix, and the canal, the pathway of the cervix is known as cervical canal. The cervical canal open into a structure that is known as vagina, and the cervical canal and vagina is commonly known as बर्थ कैनाल. इसको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल. इट मीन्स दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द बेबी कम आउट फ्रॉम द मदर्स बॉडी. ये वो प्लेस है जहाँ से बेबी मदर की बॉडी से बाहर आता है. सो दिस इज द होल एंड सोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आफ्टर इट आई एम गोइंग टू डिस्कस द male reproductive system in deep. Then after completing male, we will differentiate between male and female reproductive system. Till then, goodbye. Have a beautiful day.